अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने बहुत क्यूट से croissants बनाए और बर्गर वाले बनाए और ये बहुत अच्छे। Hey guys, today I've made these amazing croissants. I've made the regular ones and these cute mini ones, and you guys should definitely try this recipe. It is amazing. So if you want to know the recipe, keep on watching this video. अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए आप मेरे वीडियो को देखते रहें। रेसिपी के लिए हमें चाहिए 6 or other tablespoons softened unsalted butter. For this recipe, we're going to be eating 6.5 tablespoons of softened unsalted butter, 4 teaspoons of yeast, 4 teaspoon yeast, quarter cup powdered sugar, quarter cup of powdered sugar, 3 teaspoon namak, 3 teaspoons of salt, 1 cup of lukewarm water, 1 cup lukewarm water, and 3.5 cups of all-purpose flour, or 3 or other cup maida. Now what we're gonna do is we're gonna put our butter into the flour and mix it until the flour has a crumbly texture. अब हम butter और flour को mix करेंगे जब तक उसका एक crumbly texture आ जाए. The way to know that your flour is ready is when it holds its shape firm. जब आपका मैदा shape firm हो तो फिर आपका मैदा तैयार हो गया. And now we're going to add in the rest of our dry ingredients and whisk it in. अब हम अपने बाकी के dry ingredients डाल के इसको mix करेंगे. When it's mixed, I'm going to add in our water. अब मैं अपना पानी डालूंगी अंदर. Now I'm going to be using a mixer, but if you don't have one, you can do this by hand. But we need it to have a dough-like consistency. अब मैं mixer से कर रही हूँ, मगर अगर आपके पास नहीं है आप हाथ से कर सकते हो, मगर हमें अपनी dough-like consistency में चाहिए. The dough comes together, that means it's ready. जब हमारी dough साथ आ जाए मतलब ये ready होगी. Now I'm going to take my dough out and knead it using my hands. अब मैं अपनी dough निकाल के अपने हाथ से उसको knead कर रही हूँ. Take my dough ball and put it in the steel bowl that I use for mixing, and then put it out in the heat for 2 hours. अब मैं अपने dough को ball shape में करके अपने steel bowl में डाल रही हूँ. फिर इसको मैं बाहर 2 hours के लिए rise करने के लिए रखूँगी. 2 hours are over and I've taken my dough out. अब 2 घंटे हो गए, मैंने अपनी dough को निकाल लिया. Now I'm going to dust my surface with flour and knead my dough. अब मैं अपने surface को dust करूँगी मैदा के साथ और अपनी dough को knead करूँगी. I'm gonna roll my dough out. अब मैं अपनी roll करूँगी dough को. Dough is around a 1/4 inch thick. I'm gonna fold it inwards from all 4 sides. जब हमारी dough 1/4 inch thick होगी, हम अपने dough को सारे sides से अंदर की तरफ fold करेंगे. Now I'm going to wrap this up in a cotton cloth. अब मैं इसको एक cotton cloth में wrap करके इसको refrigerate करूँगी 2 hours के लिए. And now I'm just going to refrigerate the dough for 2 hours.
Our dough is out of the refrigerator, and what I'm going to do is I'm going to roll it out. अब हमारी डो निकल गई और मैं अपनी डो को अब रोल आउट करूँगी. Again, when the dough is around a quarter-inch thick, I'm going to fold it inwards. अब ये हमारा डो अब दोबारा quarter-inch thick हो गया और मैं इसको अंदर की तरफ fold कर रही हूँ. I'm going to take my cotton cloth and again put my dough into the cotton cloth and refrigerate it for 2 hours. अब मैं अपने cotton cloth में डाल के इसको दोबारा refrigerate करूँगी 2 hours के लिए. दो घंटे हो गया और मैं अपने डो को निकाल रही हूँ. Now 2 hours later, it is finally time to shape our croissants. और मैं अपने डो को थोड़ा roll out करके फिर इसको quarters में divide करूँगी. Okay, so I'm gonna roll out my dough now and I'm going to divide this into 4 sections. As you can see, these layers are exactly what we want. ये जो आप layers देख रहे हैं हमें बिल्कुल यही चाहिए. I'm going to take one of the 4 quarters and I am going to roll it out. अब मैं एक quarter लूँगी और इसको roll out करूँगी. I'm going to cut off the edges. अब मैं अपने edges को काटूँगी. Once that's done, I'm going to cut 3 strips out of the remaining dough that I have left. अब वो हो गया और मैं अपने remaining dough के 3 strips काट रही हूँ. I'm going to take the remaining butter and brush it onto the strips. अब मैं अपना melted butter लूँगी और अपने strips के ऊपर इसको brush करूँगी. Once that's done, I'm going to stack these strips on top of each other. अब वो हो गया और मैं अपने strips को एक के ऊपर करके इसको stack करूँगी.
going to grab my knife and I'm going to cut out triangles from the strip like so. अब ये हमारा स्टैक हो गया और मैं जैसे कर रही हूँ हमें ऐसे ट्रायंगल्स अपने स्ट्रिप में काटने होंगे. Going to take some more butter and brush it onto our remaining triangles. अब मैं अपने triangles के ऊपर और butter brush करूँगी. Now I'm going to take one of the triangles and I'm going to show you how to roll it so we have that croissant shape. अब मैं अपना एक लूँगी triangle और दिखाऊँगी कि हमें इसको कैसे roll करना है croissant shape के लिए. So we're going to start with the thicker side and we're going to roll it inwards with the butter side at the bottom of the surface, and that will just help it stick together better. और मैं ऐसे इसको रोल करूँगी कि thicker side बाहर हो और butter की side नीचे और उसको अंदर की तरफ रोल करेंगे हम. Now I've got some egg yolks here and we're gonna brush the egg yolks on top of our mini croissants. अब मैं अपने egg yolk को brush करूँगी अपने mini croissants के ऊपर. Set my croissants aside for now. अब मैं अपने croissants को side में रख रही हूँ and we're gonna take another quarter of our dough और मैं अपने एक और quarter लूँगी dough का and we're going to cut this into halves और मैं इसको आधे में काट रही हूँ and we're gonna take one of the halves and keep the other aside. मैं एक लूँगी half को और दूसरे को side में रख के इस वाले को I'm going to take this one and I am going to roll it out और मैं इसको roll करूँगी. Now you need a circular object with a sharp side which you can just put it inside and it will give you a circular shape. अब हमें एक circular object चाहिए जो ऐसे हमें shape circle करके दे दे. Going to do the same with the other half of the dough. अब मैं ये same करूँगी other half dough के साथ. I'm going to brush some melted butter onto one of these two circular doughs. अब मैं एक पे melted butter कर रही हूँ brush. I'm going to take the other dough and I'm going to stack this on top of the one with the butter. अब मैं अपने ये वाली dough इसके ऊपर stack करूँगी जिसके ऊपर butter लगा हुआ है already. And now I'm going to take some butter and brush it on top of this piece of dough. अब मैं butter को इसके ऊपर brush करूँगी.
take my third circle and I'm going to brush some butter on top of it. अब मैं अपने third piece of circular dough पे butter brush करूँगी और ये वाला dough को दूसरे पे के ऊपर डालूँगी. And I'm gonna put that piece of dough on top of the one we just brushed with butter. Take my knife and cut the dough like you would with a pizza. अब मैं इसको pizza की तरह काट रही हूँ. Like I did with my previous triangles, I'm going to flip and then roll it with the butter side outside. अब मैं जैसे लास्ट टाइम किया था अपने ट्रायंगल्स के साथ वैसे मैं इसको रोल कर रही हूँ. बटर साइड को नीचे करके फिर थिक साइड को बाहर की तरफ अंदर रोल करेंगे हम. I'm gonna brush my mini croissants with egg yolks. अब मैं इसको अपने egg yolks के साथ इसको brush करूँ. Now time to bake our croissants. I'm going to take my melted butter and brush the active fryer. You can do this in a home oven, in an oven, but I'm doing an active fryer because it's the easiest for me. But you can do it however. अब मैं अपने active fryer को melted butter से brush कर रही हूँ. आप इसको home oven में भी कर सकते हैं और normal oven में, मगर मैं active fryer में कर रही हूँ. And then I'm going to take my mini croissants and just place them in the active fryer. और मैं अपने mini croissants को active fryer में डालूँगी. We're going to bake our croissants for 20 minutes on medium-low heat. अब मैं अपने इसको bake करूँगी medium-low heat पे 20 minutes के लिए. Still have 2/4 of our dough left. अभी हमारे पास still 2/4 dough का है और मैं अभी 1/4 इसको लूँगी and I'm going to take 1/4 of it and roll it out. और मैं इसको roll करूँगी. Take the last quarter of our dough. अब मैं last quarter dough को ऐसे roll करूँगी like I've done with my other quarter. तो अब मैं इसको roll करूँगी जैसे मैंने अपने other quarter को roll किया. Now I am going to take the melted butter and brush it on top of this piece of dough. अब मैं अपने melted butter को लूँगी और इसको brush करूँगी.
take the other piece of dough and I'm going to lay it on top of this piece. अब मैं अपना दूसरा piece इसके ऊपर लगाऊंगी ऐसे. That's to the side. I'm going to take my remaining dough. अब मैं अपने remaining dough लूँगी और जैसे मैंने अभी roll किया था वैसे उसको roll करूँगी. And like I just rolled my dough, I'm going to do the same thing with this one. Dough that I've already layered, I'm going to brush butter on top of that piece and I'm going to layer the brief piece that we just rolled out on top of this one. जब भी हमने roll किया था और butter किया था stack को, अभी मैं उसके ऊपर butter लगा रही हूँ. फिर जो अभी roll किया था हम इसके ऊपर इसको layer करेंगे. If you have a really big cutter, you can use that, but if you don't, you can do it like I have. I'm using a big lid, pot lid, and I'm going to use it as a guide for a perfect circle. अगर आपके पास एक बड़ा circle cutter है तो फिर आप वो use कर सकते हैं, वरना जैसे मैं कर रही हूँ, मैं एक बड़ा pot lid use कर रही हूँ और उसको guide use कर रही हूँ circle cutter की तरह. And then I'm just going to go over with my knife and I'm going to cut all around it. Like we did last time, I'm going to use my pizza cutter this time and cut it out like a pizza. जैसे हमने last time किया था, मैं इस दफ़ा knife नहीं use करी मगर I'm using a pizza cutter and I'm going to cut it like a pizza. I'm going to butter my dough from the top. अब मैं अपने इसके ऊपर वाले layer को butter कर रही हूँ. We did last time, I'm going to flip it over and roll it inwards with the butter on the bottom side. जैसे हमने last time किया था, मैं इसको अंदर की तरफ roll कर रही हूँ और butter दूसरी तरफ. But this time I'm going to be brushing some butter on both sides. मगर इस दफ़ा मैं दोनों sides पे butter brush कर रही हूँ. Croissants are ready and I'm just going to take them out so we can bake our other croissants as well. Do the same process that we did with our mini croissants. I'm going to butter the active fryer, place the croissants in, bake it for 20 minutes on medium-low heat, and then take them out.
जैसे मैंने मिनी क्रॉसॉन्स की तरह किया था, मैं सेम प्रोसेस यूज़ करूँगी. मैं अपने एक्टिव फ्राई को बटर करके क्रॉसॉन्स अंदर डालूँगी. फिर 20 मिनट्स के लिए मीडियम लो हीट पे बेक करूँगी. Again, you can use a home oven or normal oven, active fryer, do whatever, whichever one you're comfortable with. Croissants को home oven, normal oven या active fryer में कर सकते हैं, जो भी आप में comfortable है जिसमें. Our croissants are ready, and now I'm just going to take them out after baking them for 25 minutes. And I have my mini croissants. These are so good. It smells amazing here, and the brown color looks amazing. It looks amazing. Croissants are amazing. They have the golden brown color, and I was taking them out. They were super crispy, and you guys have to definitely try this recipe. And the mini croissants are super, super cute. Just look at them. See? So cool. And try this recipe. Totally. It's amazing. Your recipe बहुत अच्छी है. In croissants पे golden brown color, और जब मैंने को निकाल दी तो बहुत super crispy भी है, और mini croissants भी बहुत बहुत cute है. And see, and they're so good. You guys should definitely try this recipe. Yeah, ज़रूर try करना recipe को. And if you do, tell me in the comments down below, and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe, and share my videos, and go follow me on Instagram, Facebook, TikTok, and Twitter. Bye. ये रेसिपी बहुत अच्छी है, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, और इस वीडियो को बिग थम्स अप दें. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर पर फॉलो करें. बाय.